शिवसागर में नौकरी और कारोबार का झांसा देकर लाखों की ठगी। आरोपी इफरातुर अहमद उर्फ पापू गिरफ्तार। शिवसागर जिले में कोयला कारोबार और ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी ऑल में नौकरी दिलाने के नाम पर कई लोगों से कथित तौर पर लाखों रुपए की ठगी करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले के मुख्य आरोपी बताए जा रहे इफरातुर अहमद उर्फ पापू को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार इफरातुर अहमद मूल रूप से शिवसागर जिले के बक्ता नेमुगुड़ी इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। आरोप है कि उसने कोयला कारोबार में निवेश और ऑल में नौकरी दिलाने का भरोसा देकर कई लोगों से लाखों रुपए की रकम ली थी। हालांकि रकम लेने के बाद न तो कथित तौर पर नौकरी दिलाई गई और न ही संबंधित लोगों को उनका पैसा वापस किया गया। इसी मामले में कथित रूप से ठगी के शिकार हुए 2 युवकों ने इफरातुर अहमद के खिलाफ न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय की ओर से आरोपी के नाम गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद से ही इफरातुर अहमद पुलिस की नजरों से बचता हुआ कथित तौर पर फरार चल रहा था। आखिरकार आज पुलिस को आरोपी के ठिकाने का पता चला और शिवसागर के धायाली इलाके में स्थित एक किराए के मकान में छापेमारी कर इफरातुर अहमद उर्फ पापू को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। इस कथित ठगी में कितने लोग पीड़ित हुए हैं, कुल कितनी रकम की लेनदेन हुई है और क्या इस मामले में अन्य लोग भी शामिल हैं, इन सभी पहलुओं की पुलिस जांच कर रही है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट एनी टाइम्स 24/7। फेसबुकত মই দিছিলোঁ মোৰ নাম অৰুণ কোঁৱৰ। মোৰো সেই ব্যৱসায় এটা লেনাদেন আছিলে তেওঁৰ লগত আৰু সেই লেনাদেনৰ সূত্ৰে পইচা আদান প্ৰদান ঘটিছিলে। কিন্তু আজি কিছুদিনৰ পৰা সি মানে পলাই ফুৰে মানুহটো, মোবাইলবিলাক অফ। আৰু মই মহামান্য আদালতৰ পৰা তাৰ যোগেদি যিটো কেছ খেলিছিলোঁ, কেছখন মই জিকিলোঁ আৰু কেছৰ ডেটতো সি নাযায়। অলৰেডি এজনে কৈছে, এই মনোৰঞ্জন কৈছে যে তেওঁৰ কেছখনত জিকাৰ পাছতে এছ ৱাৰেণ্ট ওলাই আছে। গতিকে আমি ভাবিলোঁ কি ইয়াকতো আমি বিচাৰি আহিলে নাপাওঁ। ভাড়াঘৰলৈ আজিৰ পৰা প্ৰায় 3 বছৰ ধৰি ভাড়াঘৰলৈ অহা যোৱা কৰি আছোঁ। ই আজি দিম পইচা, কাইলৈ দিম, এনেকৈ কৈ থাকে। মই আজি 2 দিনৰ আগত ফেচবুকত এটা পোষ্ট কৰিলোঁ যে এই মানুহ চিনি পায় নেকি, সন্ধান দিওঁতাক 10,000 টকা পুৰস্কৃত কৰা হ'ব। মোলৈ ইমানেই ফোন আহিলে, ইমানেই মেছেজ আহিলে সকলোৰে পৰা, কাৰোবাৰ পৰা 10 লাখ, কাৰোবাৰ পৰা 20 লাখ, কাৰোবাৰ পৰা 1.5 লাখ, মুঠতে লাখৰ তলত পইচা নাই সকলোৰে পৰা। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে কি, সি বোলে অইল ইণ্ডিয়াত চাকৰি দিয়ে। অইল ইণ্ডিয়াত চাকৰি দিম বুলি সি বোলে বহুতৰ পৰা খাইছে। ইজনে মানুহে মোক ৰাতি ফোন কৰিছে বোলে অইল ইণ্ডিয়াত চাকৰি দিব। কিন্তু সিটো অইল ইণ্ডিয়াত চাকৰি নকৰে নহয়। আমিতো ব্যৱসায় সংক্ৰান্তত কিবা এটা জানো তাৰ বিষয়ে, এইটো কৰে কাম। আৰু ইটো নিজৰ ইমানটো সত্য নাজানো। নহয়, এই ঘৰটোত থাকে বুলি আমি জানো যে সি এইটো ঘৰতে ভাড়াতীয়া হিচাপে থাকে। কিন্তু আমি যেতিয়াই আহোঁ সি পলাই যায়। আৰু তেওঁৰ মিছেছে কয় যে তেওঁ নাই, তেওঁৰ লগত আমাৰ সম্পৰ্ক 3-4 মাহ হ'ল, আমি গম নাপাওঁ। থাকিব পাৰে, আমি ইমান নাজানো। কাৰণ ঘৰৰ মালিকে আমাক যথেষ্ট সহায় কৰিছে যে এইটো ঘৰতে আছে। পত্নীটো নাই বুলি ক'লে। আজি কিমান দিন হ'ল অহাই নাই। থাকিব পাৰে ন, কোনোবাই আৰু নিজৰ হাজবেণ্ডক পুলিচৰ হাতৰ আগত ধৰা দিবলৈ দেখাই দিব নিদিয়ে নহয়। ঠিক আছে।